हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके। अगर आपने मुझे मिस किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे मिस नहीं किया तो मिस करना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है ट्रांसफर बिजनेस में और वो सारी चीजें आपको हम ला कर देते हैं। हम यहाँ पर बैठ के उसके बारे में बात करते हैं, आपके ओपिनियंस लेते हैं। तो वेलकम बैक टू वन MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। सबसे पहले तो लेट मी वेलकम नेथन वंस अगेन। नेथन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू? Hello guys, good evening. कैसा लग रहा है कि हम आज फाइनली ऑली वॉटकिंस से लिंक हो गए हैं? यू वर आस्किंग फॉर इट, यू वर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी आर नॉट लिंक्ड विद ऑली वॉटकिंस, एंड नाउ लॉरी विटविल हैज जस्ट ट्वीटेड दैट यूनाइटेड आर कीपिंग ऑली वॉटकिंस एज द प्रायोरिटी वन इन नंबर्स, मतलब सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर। तो आई मीन व्हाट ओपिनियंस? I mean, honestly, at this rate, it's better to be proactive than reactive. The only thing is, I would say, is how much are we paying? If we are paying around 40, then fine. If we are paying more than 40, then no, because of his age. Oh yeah, looking Premier League proven, good age, little on the older side, which is what we need. But as far as I'm concerned, it is better than just hanging around and doing nothing. So let's see where it moves. आई थिंक देखो, ऑली वॉटकिंस अगेन, मैंने जब उस दिन हमारा डिस्कशन चल रहा था, you said it or somebody else said it that why are we not going after Ollie Watkins? I think somebody from the chat said it कि भाई why are we not going for Ollie Watkins? और उस टाइम मेरा ओपिनियन यही था कि there are younger center forwards available in the market. विला बहुत ही मतलब गलत क्लब है if you want to do business, क्योंकि यहाँ पर विला, अब जैसे अगेन चेल्सी ने एक पाथ ले डाउन किया और उस पाथ को फॉलो कर रही है वेस्टर्न विला। अभी लास्ट टाइम जहां पर PSR लगने वाला था चेल्सी के ऊपर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी विमेंस टीम जो है वो अपने ही ओनर्स को बेच दी और उन्होंने अपने PSR सैंक्शंस होने से बचा लिए। अब विला भी वही कर रही है, विला ने भी सेम पाथ अपनाया है। नाउ अब क्या है कि क्योंकि अब उनके ऊपर PSR के सैंक्शंस नहीं लग सकते, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपनी जो डील्स हैं वो अपने डिमांड प्राइस पर सेल करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, सिटी जाएगी टांगे खोल देते हैं क्लब्स, चेल्सी जाएगी टांगे खोल देते हैं क्लब्स कि भाई आओ हमारी मार लो, हमें तुम 15-20 मिलियन दोगे तो भी हम बेच देंगे यहाँ पे, यू नो। एंड दीज क्लब्स नो द टैक्टिक्स कि भाई उनको एक सर्टेन प्राइस के ऊपर पे नहीं करना है, और वो इसलिए भी ये चीज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अबंडेंस में प्लेयर हैं उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, या फिर उनको जरूरत ही नहीं है उतना पैसा पे करने की उस एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, बिकॉज उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखे 3-4 मल्टीपल टारगेट्स। यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि यूनाइटेड जब किसी मार्केट में उतरती है किसी प्लेयर के लिए, तो वो उस प्लेयर के अलावा किसी और प्लेयर के ऊपर यहाँ पर फोकस करते ही नहीं है। आई मीन द प्राइम एग्जांपल अभी 2-3 साल पहले वाज फ्रैंकी डियोंग। वी वर आफ्टर फ्रैंकी डियोंग एंड हमारे पास फ्रैंकी डियोंग के अलावा कोई और ऑप्शन दिमाग में था ही नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो सेम कैन बी सेड अबाउट MBEUMO, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यहाँ पर यूनाइटेड मैनेजमेंट फॉर दैट, बट यू पोर्ट्रेइंग समथिंग के भाई ही इज द ओनली प्लेयर दैट वी हैव इन आवर माइंड्स इन आवर प्रोजेक्ट राइट नाउ फॉर दिस पोजीशन। तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि फिर सामने वाली पार्टी किस तरीके से आपको डील करती है। आज ही उनके डायरेक्टर का एक ओपन स्टेटमेंट आया है दैट अगर डील एग्री नहीं होती है MBEUMO will stay at Brentford, and वो बिल्कुल चुतियाप वाली न्यूज़ है, मैं सही बता रहा हूँ। He is 110% going to leave Brentford. No way Brentford will basically give up an opportunity जहां पर उनको एक अच्छा खासा चंक मनी मिलने वाला है। एक मिनट, यहाँ पे हर्ष ने मैसेज किया, हेलो पोक, हाउ आर यू?
I hope you are good as you're facing a lot of trouble in regard to your channel. Harsh, I mean, things are not going well. You know it, everybody knows this. बट अगेन कल मेरी बात हुई थी, मतलब मेरे दोस्तों से बात हुई, मेरे घर पे बात हुई, फिर मेरी दिव्यांश मुक्तेश वगैरह से बात हुई, सब ने यही बोला कि आप कुछ दिन अभी स्ट्रीम मत करो. बट फिर मैंने उनको यही बोला कि भाई अगर मैं स्ट्रीम नहीं करूंगा तो फिर मैं कमाऊंगा क्या? Because again this is like a job to me and this is what I chose for myself, so obviously I cannot sit and wait for the people to stop, harming my channel. I have to put an effort, I have to put the content on the channel irrespective of whether people will want to watch it or not, because that is what my job is. And Pankaj, thank you so much yaar for joining the membership once again. And Rohit ने यहाँ पर 20 महीने पूरे कर लिए, क्या बात है रोहित यार, ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट. बट एज मतलब नेथन, व्हाट आर योर थॉट्स? लेट्स से कि वी आर नॉट गोइंग फॉर गिकरेज. बाय द वे भाई, गिकरेज का जो एजेंट है ना वो बहुत चूतिया है, नॉट इवन गोइंग टू लाई. वो बंदा अपने एक ऐसे प्लेयर को मार्केटेबल नहीं बना पा रहा है जिसने लिटरली हालैंड, सॉरी एम्बापे, साला और लेवेंडोस्की के साथ कंपीट किया है फॉर द गोल्डन बूट, यूरोपियन गोल्डन बूट. आप उसको कैसे मार्केटेबल नहीं बना पा रहे हो, उसको कैसे सेल नहीं कर पा रहे हो बड़े क्लब्स को? आज की डेट में कोई भी यहां पर बात ही नहीं कर रहा है विक्टर गेकेरेस को सीरियसली लेकर. ईदर क्लब्स आर गोइंग आफ्टर सेस्को और दे आर गोइंग आफ्टर ह्यूगो एकिटिके, या फिर वो कोई सेकेंडरी थर्ड प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं. नो बडी इज एक्चुअली कंसिडरिंग विक्टर गेकेरेस की साइनिंग. और उनका जो बेसिकली डायरेक्टर है स्पोर्टिंग का, उसने भी बोल दिया है कि यस, अगर अच्छा प्राइस मिलता है वी विल डेफिनेटली लेट गो विक्टर गेकेरेस, बट नॉट फॉर 65 प्लस 10 मिलियन यूरोस. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अगर लेट्स से कि वी आर नॉट गोइंग आफ्टर गेकेरेस, वी आर नॉट एबल टू साइन ह्यूगो एकिटिके, so for what price, if we end up getting Ollie Watkins, at what price should we actually get Ollie Watkins? No voice, no voice. Mute पे है शायद. No, nothing over 40 million. Nothing over 40 million. I think 40 million भी बहुत है यार. मैं तो कहूंगा कि Yeah, but 35. I mean, if you look at the going rate of everyone, 40 million is decent because João Pedro is going for what, 55 million? He has 16 GA last season and 36 GA in the last 2 seasons. Ollie Watkins, I think, has way more than that. मैं दिखाता Plus हूँ ना, मैंने उस दिन plus किया था João कंपैरिजन. Pedro is injured even, isn't it? João Yeah, Pedro gets he's injured quite frequently. yeah, he gets injured quite a lot. But पता प्रॉब्लम क्या है? जाओ पेड्रो हमें आइडिया ही नहीं लगा कि कब निकल गया. और चेल्सी ने अपना बिजनेस बहुत तमीज से किया है. उन्होंने हवा भी नहीं लगने दी कि भाई वो किस में इंटरेस्टेड है. ब्राइटन में था ना जाओ पेड्रो ये रहा. और एक और स्ट्राइकर ले लेते हैं अपन प्रीमियर लीग से ही. प्रीमियर लीग से लें या किस से लें? यू टेल मी. I mean, David is confirmed now to Italy. So maybe take Tony. आइवन टोनी. Yeah. There has been सऊदी rumors. सऊदी प्रो लीग में है ना वो. Yeah. सऊदी Ivan प्रो लीग. Toney, John Duran is coming after 1 year back to Turkey. भाई वी शुड एक्चुअली, पता है, वी शुड एक्चुअली गो आफ्टर जॉन डुरान. नॉट इवन किडिंग. हमें कंसिडर But करना चाहिए जॉन डुरान को. Ronaldo, part of the new agreement, is owner of Al Nassr. No, you won't want to do business with us. नो, व्हाई नॉट? आई डोंट थिंक ही विल. Why not? I mean, आई मीन सी, उसका जो भी था वो प्रीवियस मैनेजमेंट और मैनेजर के साथ था. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करने से मना कर देगा. इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड द प्लेयर इज इंटरेस्टेड कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग, देन व्हाई नॉट? बिकॉज जॉन डुरान अगेन एक वो प्लेयर है जिसको हम बेसिकली अच्छे तरीके से यूज भी कर पाएंगे. ही इज अ रेडीमेड प्लेयर फॉर दैट पोजीशन. एंड ऑब्वियसली बात है वो विला में खेल चुका है और बायर्न के अगेंस्ट वगैरह भी गोल स्कोर कर रखा है. हैज गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन बिग गेम्स एज वेल, जो कहीं ना कहीं हॉलैंड जब हमने साइन किया था तो वो लैक करता था. डुरान के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस चीज का. तो आई मीन आई वुडंट माइंड हैविंग जॉन डुरान ऑनेस्टली. मैं अपने ही प्लेयर से कंपेयर कर लेता हूँ ना. कहाँ गया? वहाँ कहाँ है भाई वो हॉलैंड? ये रहा. सो दिस इज इट. ये कहाँ चला गया? नेथन का क्या हुआ?
अरे मैं तो पीछे स्क्रीन ही शेयर करता रहा, रुको 1 मिनट। ये है भाई स्टैट्स आपके सामने, अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नेथन को क्या हो गया, 1 मिनट। पंकज कह रहे हैं यहाँ पर, भाई माय फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड एज टू स्पेंड ऑन मेंबरशिप, बट योर स्ट्रगल राइट नाउ इज सेड टू सी योर माय फेवरेट फुटबॉल चैनल इवन दो आई एम अ चेल्सी फैन, डोंट स्टॉप बॉय नो मैटर व्हाट। अरे थैंक यू सो मच है पंकज भाई, नो कंट्रीब्यूशन इज बिग और स्मॉल भाई, थैंक यू सो मच। एंड सूरज थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। मोक भाई वी शुड गिव इनियोस टाइम सो दैट वी कैन सेव 5 बिलियन फ्रॉम द एमएमओ डील। कैंटीन बंद कर दिया है, साल भर का राशन आएगा उन 5 मिलियन से। अरे मेरे ख्याल में अब देखो, क्योंकि कल 1 तारीख है, तो यहां से कल से आपकी नई पीएसआर विंडो शुरू होगी। एंड आई फील यहां पर कि इनियोस मैनेजमेंट इसी एक नए पीएसआर विंडो का वेट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस साइनिंग को थोड़ा डिले किया है। और ऑब्वियस सी बात है, वो वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है ब्रेंटफोर्ड के एंड से और हमारे एंड से, उसको थोड़ा सा वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। भाई मैं बोलता ही रहा, मुझे लगा सुन रहा है, फिर मैंने एक टाइम बाद देखा कि सामने से कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो फिर मैंने विंडो स्विच की, मैं प्लेयर कंपैरिजन में लगा हुआ था। सो दीज आर द स्टैट्स इफ यू लुक एट इट। 31 गेम्स यहाँ पर खेले ओली वॉटकिंस ने, 7 एज अ सब्स्टिट्यूट। 23 गेम्स यहाँ पर खेलने हैं जाओ पेड्रो ने, 4 एज सब्स्टिट्यूट। 23 यहाँ पर हॉयलैंड ने एंड 9 एज सब्स्टिट्यूट्स। उन्होंने 16 गोल स्कोर किए, 8 असिस्ट हैं। जाओ पेड्रो के 10 गोल्स हैं, 6 असिस्ट हैं। तो मतलब देखो ये दोनों प्लेयर्स ना सिर्फ गोल स्कोरिंग उस पे नहीं, चार्ट पे नहीं, आपके क्रिएटिव चार्ट पे भी काफी इफेक्टिव है। हॉयलैंड ऑन द अदर हैंड हैज बीन मेरे हिसाब से द पुरेस्ट ऑफ ऑल। अगर मैं किसी भी फॉरवर्ड की बात करूं इन द प्रीमियर लीग, चाहे आप कोई भी प्लेयर उठा के देख लो, वीसा उठा लो, आप पेड्रो उठा लो, वॉटकिंस उठा लो, अगर आप यहाँ पर क्रिस वुड उठाओगे, इसाक से तो कंपेयर भी नहीं कर रहा। तो आई फील यहाँ पर इफ वी आर गोइंग टू गो आफ्टर ऑली वॉटकिंस, और अगर वो हमें एक डिसेंट प्राइस में मिल जाता है, ठीक है, मतलब आई वोंट माइंड हैविंग अ प्लेयर लाइक ऑली वॉटकिंस, बट देन अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस। पहली मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि हमें वो प्लेयर साइन करने हैं जो प्रोजेक्ट में अगले 4-5 साल अच्छे से काम करें और हमारे प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं। बट वुड यू टेक जॉनथन डेविड, नेथन? I think Jonathan David is confirmed. He's not going to be here. I think he's going to Italy no matter what. नापोली ने तो मेरे ख्याल में हाथ पीछे खींच लिया ना Juventus. जॉनथन I डेविड। think Juventus he's going to. I think. I would take anyone at this point of time. But the real problem is how much money are we paying for this player? Because I mean, I don't know if you remember, but early last month, sorry, or maybe late last month, we were linked to a Eintracht Frankfurt, not Eintracht Frankfurt, sorry, Mainz striker Jonathan Burkhardt. या I mean, I would take him. If we are looking to get a new striker and not spend too much money, then I would take Burkhardt. He's got plenty of experience so far, and honestly, it all depends on how much we're willing to spend. We might have to think outside the box. आई फील स्ट्राइकर पोजीशन हमारा शायद लास्ट कंसर्न होना चाहिए। पहले हमें मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आई फील मिडफील्ड, सेंटर बैक एरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द गोल कीपिंग एरिया। बाय द वे इसाक विल मूव, इट्स कंफर्म्ड भाई। इसाक इज गोइंग टू लीव न्यूकासल। न्यूकासल का मेल्ट डाउन होने वाला है बहुत गंदा, बिकॉज उन्होंने जिस प्लेयर को टारगेट किया, दे वर टारगेटिंग जाओ पेड्रो इज गॉन। They were targeting Kerkez is gone. They were targeting Cunha is gone. Now they want to keep Isak, and Isak, I think he's Cunha going went to where? leave. There's only one United, right? Yeah, there's only one United. There's only They one are United. Newcastle. They are Newcastle. They're not United. There's West Ham. There's Newcastle, but there's only one Manchester United. So there are too many Sheffields and the other clubs, but there's only one United. I think Isak will join Liverpool. I feel I strongly believe Liverpool are going to break the bank इस विंडो में। एंड पता है उनके लिए बैंक ब्रेक करना इसलिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो अपनी सेल से वो रिकवरी कर लेंगे। उन्होंने अभी बेचा है, अगर आप देखोगे जेरल कॉन्जुआ को, उन्होंने कैलेहर बेचा है। दे माइट सेल हार्वी एलियट एज वेल।
अगर हार्वी एलिट के लिए अच्छा ऑफर आता है, एंड आई फील न्यूकासल शायद हार्वी एलिट को उस डील में इंक्लूड करना चाहेगी. That's what I feel. वो शायद यहाँ पर हार्वी एलिट को उस डील में इंक्लूड करना चाहेंगे. रियल मैड्रिड इज कमिंग फॉर इसाक. रियल मैड्रिड का तो अभी मुझे दूर दूर तक कुछ भनक नहीं है कि रियल मैड्रिड आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इसाक. डू यू फील रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में से कोई इसाक के लिए I mean, करने वाला? I think Real Madrid need a striker, but I mean, everyone still insists that Mbappe is a striker. So maybe they don't think they need a striker. But Deco has basically out and out said we don't need a striker. So I'd be very surprised. I'd be very surprised if Barcelona bid. Um, but I mean, honestly, we were having this conversation after the Europa League final. Everyone said, where are we going to finish? Everyone's making moves. I told everyone, all the successful teams will be stripped apart. I said that we can't possibly finish 15 next season because all the teams are better than us will be stripped apart. And it's proven to be right. The Newcastle can't buy a player. If they're so good and we are so behind Newcastle, why are they struggling? Everyone can pinpoint why we are struggling, right? It's quite obvious. But why is everyone else struggling to sign? Remember, I told you this. I told you we cannot possibly finish 10th. It doesn't matter what anyone says. We have to finish in the top half of the league because all these better teams are going to get stripped. Bournemouth has got fully stripped. Brentford's got fully stripped. Newcastle can't sign a player. They're either staying in England or they're going elsewhere. I mean, there is no excuse for Amarim. If he finishes 10 below, he's done. He's done. It doesn't matter what anyone says. Give him time, don't give him time, negative, positive. There's no excuse. All these teams we thought that are going to compete with us. In Aston Villa, what is Aston Villa about this season? Everybody that has done better than us have actually are not doing well in the market, including the teams that are going to finish top four. I mean, Arsenal took really long to do deals that allegedly were the Zubamendi deal was talking about in January. It got done. What? It's technically still not done. Like literally, Man City and Liverpool are the only teams that have actually made deals, not talks, deals. Everybody else has not really made a deal. I don't understand why people are worried about us next season. There's a lot of teams that are going to get stripped. There's just a lot. And it's one of those teams is not going to be us because nobody wants our players. So that's what I think. So I am as always, I am very calm. Probably shouldn't be, but I'm very calm. And like people are surprised, but I'm not really that surprised at the moment. Because I just knew teams are going to get stripped. All the overachievers are going to be picked apart because the better clubs will be more attractive to those players and they'll just move just by sense, just usual things. अंकुश कह रहा है लव दिस चैनल. थैंक यू सो मच अंकुश मेरे भाई फॉर द कंट्रीब्यूशन. लव एंड सब्सक्राइब, सॉरी लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो वीडियोस पे. लेट्स डू आवर पार्ट ऑफ सपोर्टिंग द चैनल. Aditya is saying thank you so much. Aditya, hi Nathan. Just curious on why your channel named Sports Nut Nathan. Oh, it's very simple. It's because there was a point in time where I just used to consume sports, where people watched, for example, Hindi movies or go to the cinema. I would either play if I got the opportunity because where I live is kind of rural, so the opportunities to play isn't much depending on the season. I just engross myself in all kinds of sports: UFC, WWE, tennis, cricket, football. Even I would get up early to watch basketball, even when it was possible for me. I just absolutely love sports. I think sports has been a constant in my life when other things haven't. So I thought it would be appropriate. I mean, I could do something with United, but honestly, I always wanted to watch all kinds of sports and build a variety community. It's a risk in YouTube, but I prefer to do that because at least that's what I love to do. I don't feel constricted, especially for example in a season like this where United is doing badly. I have some kind of release to watch something else, if that makes sense. साई कह रहा है यहाँ पर थॉट्स ऑन एबरेची इजे. Mobhai just fab tweeted ask Agu and more power to you following you from 50k as an Arsenal fan. I may not agree with some opinions, but you're my favorite, one of my favorite creators. Thank you so much, Sai. Eze is a very, मतलब वो कहते हैं ना कि
वेरी फ्यू प्लेयर्स मॉडर्न फुटबॉल में जो आज भी वो फ्लेयर होल्ड करते हैं और शो बोटिंग से घबराते नहीं हैं. बट बट वो क्या आर्सेनल अभी, मतलब अभी वो कर सकती है क्या, मतलब एक ऐसा प्लेयर अफोर्ड एजे जैसा? डू यू फील नेथन? I believe Eze has a buyout clause. I remember him signing a deal with a buyout clause when Patrick Vieira asked him to, if you want to go, go, but please sign a buyout clause so we can repurpose the money to rebuild the club when you leave. He literally turned 27 yesterday. I think it's a good deal. I just don't know where he plays, because where does Odegaard play? Because I would prefer to play Eberechi Eze behind the striker. Where is Odegaard playing? Then they bought Zubermendi. They have, I mean, they're not really short on midfielders, but I mean, he's obviously a very good quality player. I suppose you could play him on the wing if you need to, but I mean, it would be a great buy for Arsenal. A few years ago, they were trying to buy Wilfred Zaha. I remember seeing the tweet when he was in a club in London, and the DJ was like, "When are you going to sign for Arsenal in the like, during the holiday season?" I remember seeing that. So, I mean, Arsenal links with Crystal Palace is not uncommon, of course. If you know, you know. So, it would be a great deal for Arsenal, I think. He's a very promising player. He's very cold. He's very calm under pressure. Free kicks, creativity. I mean, it's fantastic. Obviously, Premier League proven. आई टू फील द सेम. दक्ष इज सेइंग 20 मिलियन की इंस्टॉलमेंट है उसके रिलीज क्लॉज की. लेफ्ट विंग एंड ओडिगार्ड बैकअप खेल लेगा.